and welcome to Master of English. पिले आमे गतकाली इंग्लिश ग्रामर रो जो मॉडल्स अच्छी मॉडल वर्ब एक्चुअली वर्ब विषय आमे पढ़ुतले आमे ऑलरेडी वुड रो व्यवहार पर्यंत पढ़ीचे आउ जो बाकी सब मॉडल्स रहिला से बाकी सब मॉडल्स रो व्यवहार विषय रे आज आमे एई क्लास रे पढ़िबा. So the next model that to be studied by the students and should be known to the students is what is should रो व्यवहार. Usage of should को केस रे व्यवहार हुए नहीं. What are the usage of should? को in which condition we use should? What are the conditions that are necessary to use should? And what are the sequence and situation for that we use should? Let us see. So what happens? The modal should is used in the following grounds, like first one is to give advice, opinion and suggestion. First one is to give advice, opinion and suggestion. Advice कहले हम जानी जे समस्त उपदेश उपदेश, ओपिनियन कहले मतामत, सजेशन कहले भी मतामत. So these are the cases in which we use should ता व्यवहार हुए. आउ should आमे समस्त जानिथिबा उचितार्थ बोधक शब्द बोली भी ताकू कहंती ओडिया रे. तो प्रथम जिनस जेमती फॉर एग्जांपल आमे देखिबा उदाहरण जदि आमे देखिबा जेमती ही शुड बी ए गुड स्टूडेंट्स. लुक एट दिस. ही शुड बी ए गुड स्टूडेंट्स. अरे से गोटे भल छुआ भल माने पाठ पढ़ा कथा भल छात्र हवा कथा से भाई आ गोटे जदि आम देखा यू शुड बी ए साइंटिस्ट. हाँ यू शुड बी ए साइंटिस्ट. ये कौन दिस इज व्हाट सजेशन. दिस इज सजेशन. दिस इज एडवाइस. यस ना. In this condition we use should. Okay, first one is for advice, opinion, suggestion. Let us see the second condition. Second condition is what? Second condition is to express conditional clause. कौन? To express conditional clause. Second one is to express conditional clause. CONDITIONL CLAUSE. Conditional clause. आम जानी थे all the if clause in English. जिते if clause अच्छी if clause are called the conditional clause. English रे if clause को conditional clause बोली clause है. In yes. ठीक है if clause. जेमती if I were a king. If I were a king, I must have lots of queen. Many queens. बहुत सारा रानी था अंते मोर जो मुझे दे राजा ही था. तो से बोलिया. To express conditional clause. जेमती should we study hard, we shall pass the exam. Look at this. Should we study hard, we shall pass the exam. जदि आमे भलो परिश्रम करिवा, should we study hard, we can use should at the beginning of the sentence. Should we study hard, we will pass the exam. This is the condition. Number three is to talk about probability. To talk about probability. Number 3 is what? To talk about probability. संभावना व्यक्त करिवा पाए. टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी व्यक्त करिवा पाए भी आमे कोन व्यवहार करथाउ? यस शुड ता व्यवहार करथाउ. जेमिति ही शुड बी एट होम नाउ. हम गेस करी कि कहबा ही शुड बी एट होम नाउ. As per the situation we can say that he should be at home. वर्तमान एई समय रे से घरे ही थिबा कथा नहीं. So probability, this is what we call probability. Then number 4, to express necessity, duty and obligation. This is the vital point of should. To express, number 4, to express what? Necessity, then duty and obligation. 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 To express नेसेसिटी कहले कौन बोले आवश्यकता जहाँ कहूँ आम नेसेसिटी ड्यूटी कहले कर्तव्य एंड ओब्लिगेशन कौन जिन को मानिबार जो नियम श्रृंखला थाए
ताको आमे कहबा सो टू एक्सप्रेस नेसेसिटी ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन वी यूज व्हाट द मॉडल शुड टा व्यवहार करतो जेमिति यू शुड यू शुड टू डू द लेसन यू शुड टू डू द लेसन तुमको ए लेसन टा जेमिति हेले करिवार अच्छी एट एनी कंडीशन बिकॉज दिस इज योर this is necessary for you. Then number B, you should help the poor. You should help the poor. गरीब मान को तमे सहाय्य करबा दरकार. That's why the God has given you property. भगवान सेहि पई तुमको धनी करके रखि जंदे. You should help the poor. If we'll go for the next example, you can say they should obey the laws. They should obey the laws. सेमाने नियम मानिबा आवश्यकता अछि. Then we should respect our teachers. We should respect our teachers. आमे आम शिक्षक मान को सम्मान देवा दरकार. Yes or no? Then rule number 5. This is rule 4. Let us see rule number 5. 5 number rule कौन कहे? To express request and polite form of want. To express request and what? Polite form of want. Polite form of want. To express request अनुरोध व्यक्त करिबा पई and polite form of want जेमिति माने मु कहिबा को चाहूची चाहिबा अर्थ रे व्यवहार होबो. So look at this. What happens? You should like to we should like you to teach us. We should like you teach us. आपण आमको पढ़ाइबा दरकार अछि. Next you can go for it. I should like to say that he has not committed this mistake. He has not committed. माने कहि पारे जे से ए भलिया भूल करी नथिबो. Rule number 6, to express wish or desire. To express wish or desire. To express wish or desire. इच्छा आग्रह विश डिजायर इच्छा आग्रह व्यक्त करबा पई जेमती आई शुड लाइक टू बी ए डॉक्टर. आई शुड लाइक टू बी ए डॉक्टर. मु जने डॉक्टर हबा पई चाहूची. आई शुड दिस इज माय विश. आई शुड लाइक टू बी ए डॉक्टर. देन ही शुड लाइक टू बी ए प्रोफेसर. से जने प्रोफेसर अध्यापक हबा पई चाहूची. ही शुड लाइक टू बी ए प्रोफेसर. Right? So these are the example where we use should for wish and desire. Rule number 7 कौन कहे? Rule number 7 कहे to express surprise. Rule number 7 कहे to express surprise. आश्चर्य व्यक्त करिबा पाई. To express surprise we use also should. It is very surprising that Roger Federer should lose the match. It is very surprising that India should lose the match. भारत और साउथ अफ्रीका ठारो हारिगा. It was surprising. Rule number 8. 8 number नियम कौन कहे? To express supposition or improbable action. Rule number 8 कौन कहे? To express supposition and improbable action. Improbable action पाई supposition और improbable action पाई व्यवहार हुए. Improbable action और supposition पाई भी व्यवहार हुए. जेमती should we work hard? We will pass the exam. Conditional clause जेमती व्यवहार करूछे हमें. Should we work hard? We will pass the exam. Okay. So this is what? This is the uses or usage of, you can say, should. Let us go to the uses of could. बर्तमान देखिबा could रा व्यवहार. Could uses of could. आमे समस्ते जानी थिबा could को बहुत लोग कहंती could टा होची past form of can, but it is not the past form of can. It is the strong form of can. That is called strong form of can. In one case only, in direct and indirect speech or in narration change, it is used as the past form of can. This is the main thing we must know. Okay. So could, when we use could केतबेले व्यवहार करिबा में. प्रथम जिनस हला to express past ability. First rule, to express past ability. कौन? Past ability. अतीत रे गोटे जिनस मु करि पारुथिली.
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିପାରୁ ନାହିଁ इन दैट कंडीशन यू आर टू यूज could could ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ so for example I could speak 5 languages I could speak 5 languages ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଭାଷା କହିପାରୁଥିଲି it was my ability in the past then he could study 8 hours at his school career he could study 8 hours at his school career ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମରେ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି but now it's not continuing getting me so to express past ability we use could the second rule is to express possibility second thing to express possibility संभावना व्यक्त करबा पाई टू एक्सप्रेस possibility we use what could जेमिति the chief guest could come here at any time the chief guest could come here at any time chief guest कोनो भी समय आसी पारंती तापरे your suggestion could be reasonable तम सजेशन रे जुक्ति अछि yes your suggestion can be accepted because it is reasonable rule number 3 तीन नंबर रूल कौन कहे पिले to express polite request to express polite request rule number 3 to express polite request भद्र भावे अनुरोध करिवा पाई to polite request so politely request करिवा पाई आमे व्यवहार करथौ कोन could we use could you give your book please look at this could you give your book please दयाकरी मते आपनकर बही देई परिबे कि could you give your book please could you pass the salt please आमे जेमति माने डाइनिंग टेबल रे बसछे खाइबा पई बसछे लूण दरकार पड़ला could you pass the salt please salt टा टिके दबो के मते could you pass the chili please like this so polite request for polite request we use could आउ कोन number 4 to express feeling of impatience अधैर्य to express number 4 to express the feeling of impatience कहले कोन पिले अधैर्य impatience the feeling of impatience अधैर्य व्यक्त करबा पे जेमति what could I do now oh god what could I do now वर्तमान मु कोन करिबी नहीं like how could it happen या केमती घटी पारे how could it happen with me मो सहित या केमती घटी पारे so this is what feeling of impatience अधैर्य माने जतबेले आमे धैर्यच्युत घटिबा हमर सही समय जतबेले आमे जो सेंटेंस गुडी का व्यवहार करछे सही समय आमे व्यवहार करिबा नंबर 5 रूल नंबर 5 कोन टू एक्सप्रेस परमिशन व्यक्त अनुमति दबा पाई 5 रे होची 5 हला to express permission अनुमति दवा पाए to express permission we use what could टा व्यवहार होता है जेमते you can say could I go home now sha could I go home now मो वर्तमान जाई परिबी कि could I read the book बहिटा मो पढी परिबी कि so if you'll give me permission I could read the book आपण जदी परमिशन देबे मो बहिटा पढीबी this is what the uses of could रो व्यवहार वर्तमान पिले आमे टिके जिबा आगु तापर अछि uses of might रो व्यवहार might के तळे व्यवहार होबो देखिबा uses of might uses of might रो व्यवहार आमे जानि जे समस्ते might टाको may रो past tense बोली कुहा जा but it is not exactly it is the strong form of may is called might and only it is considered as the past tense while changing direct into indirect speech this is considered the past form of may remember this because modal verb has no past form remember so what happens the modal might is used in the following condition what are those conditions let us see to express probability and possibility first condition is to express probability what probability and possibility and probability संभावना और संभावित जो आमे कहूचे to express probability and possibility like
ହି ମାଇଟ୍ କମ୍ ହିୟର୍ ଟୁମୋରୋ, ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିପାରନ୍ତି। आवर एग्जाम माइट हेल्ड इन एप्रिल, आम परीक्षा मार्च रे एप्रिल रे हम, मार्च रे हम ना। ओके, से भाया नंबर बी, द टीचर माइट टीच द इंग्लिश टुमोरो, टीचर माइट टीच द इंग्लिश टुमोरो, आम टीचर आसंता काली आमको कौन पढ़ेबे, इंग्लिश पढ़ेबे। दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू कौन बोले, टू एक्सप्रेस आर सीक परमिशन, टू express, to express and seek permission, to express and seek permission, permission दबा पाई, permission मागिबा पाई, permission दबा पाई, permission मागिबा पाई कौन व्यवहार होता है, might व्यवहार होता है। फॉर एग्जांपल कौन बोले, you might take my text if you want, you might take my text if you want, तुम जदि चाहूच मो बही नहीं पारिबो। might I go home now, वर्तमान मो घर को जाई पारिबी की। might I ask your name, might I ask your name, मु तुमको तुम ना पचारी पारे की। so this is what, to express, seek or express and seek permission. number 3, to express future condition, number 3, to express future condition, future condition, भविष्यतर शर्त व्यक्त करिबा पाए, फ्यूचर कंडीशन व्यक्त करिबा पाए हमें व्यवहार करी थाओ। फॉर इफ यू वर्क हार्ड ही माइट गेट द फर्स्ट क्लास, फ्यूचर कंडीशन। इफ यू वर्क हार्ड, से जदि बहुत माने कठिन परिश्रम करे, इफ यू वर्क हार्ड ही माइट गेट द फर्स्ट क्लास, से फर्स्ट क्लास पाइबो। if the Indian players played well, they might win the ICC World Cup, भारतीय खेलाड़ी माने जदि भल खेलती से माने कौन करि परिबे, से माने ICC वर्ल्ड कप जीतिबे। देन टू एक्सप्रेस पर्पज, नंबर 4, टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य व्यक्त करिबा पाए, टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य व्यक्त करिबा पाए भी माइटटा व्यवहार हेई थाए। So what is there then, to express purpose, we send an application so that he might grant it, we send an application that he might grant it, आमे माने गोटे एप्लिकेशन दवा से माने ताको मंजूर करि पारंती। they run fast so that they might catch the bus, से माने जोरे दौड़ू चंती जहा फल से माने कोन करि पारबे, माने बस टाको कैच कर पार। देयर इज ए पर्पज, गोटे पर्पज अछि, उद्देश्य नै कि आमे करूचे। देन रूल नंबर 5, टू एक्सप्रेस गुड विशेस, good wishes, to express good wishes, rule number 5, 5 number नियम कौन, to express good wishes, माने जन को जो विश करुचे आमे, in this condition we can use to express good wishes, my father wished that I might win this match, मो बापा मते आशीर्वाद करिसंती, मो बापा चाहूचंती जे मु मैच टा जीतिबे, मु जीति पारिबी, से मते कहिसंती ऑलरेडी। द टीचर विश्ड दैट ही माइट गेट द फर्स्ट क्लास, आम शिक्षक कहिसंती जे से फर्स्ट क्लास पाइबो। रूल नंबर 6, टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ डिससैटिस्फैक्शन और रिप्रोच, रूल नंबर 6, टू एक्सप्रेस व्हाट, ए डिग्री ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, satisfaction or reproach, REPROACH, approach, reproach, कौन सेंस माने प्रवर्तैबा मना करिबा ए केस रे। So to express a degree of dissatisfaction, or you might pay a little more attention to your appearance, you might pay a little more attention to your appearance, तमे जो बेसभूषा पिंधुछ आ टिके भलो ड्रेस पिंधला हुंदानी, this is what we call dissatisfaction नहीं। So rule number 7, might is also used with the perfect infinitive, आउ कोथरे पिले, rule number 7, it use with, it is used with perfect infinitive, perfect infinitive सहित भी व्यवहार होता है। जमती दे माइट गो होम विथ हिज फादर,
They might go home with his father. Then why did you drive so scarcely? You might have run into the lamp post. Might plus have plus bhitri. This is what the perfect. Might plus have plus bhitri. This is called your perfect infinitive. This is called what? Perfect infinitive. Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଯିବା ଟିକେ ଅଟୁ ଆଉ ସୁଡ୍. Let us see ଅଟୁ and ସୁଡ୍. ଅଟୁ and ସୁଡ୍. Ottu and should. Okay, let us see. So to express strong probability, ought is used to express strong probability. Modal should जगह ought केते बेले व्यवहार हवा if there is strong probability. जदि strong probability अछि ताहले से जगह should जगह हमें ought लगेइबा. जेमति it ought to rain. It may rain जगह it ought to rain आमे माने कहि परिबा. If there is strong probability, आकाश रे कला मेघ देखिलोनी बसा टिपिट टापर आरंभ हैलानी, so you can say, you can guess, and so strong probability there. To express moral duty or obligation, आउ कोन? To express moral duty or obligation, rule number 2 मो लेखु नै. To express moral duty and obligation, कोन जेमति we ought to obey our parents, we should obey our parents आमे जेमति कहू जे सेही जगह रे we can use we ought to obey our parents. आमे निश्चित भाबे हम बापा मां को सम्मान देबा दरकार. We ought to respect our teachers. Yes, our teachers deserve respect. That's why we must obey our teacher. So we ought to follow the great ancestor. हमर पूर्व पुरुष मानक कथा को आमे फॉलो करिवा दरकार. से माने जहा करथुले ताको आमे फॉलो करिवा कथा. रूल नंबर 3 कोन 3 कहू टू एक्सप्रेस desirability and wish. Desirability एवं wish पाई मध्ये ought to व्यवहार हेता बिले I ought to help you. I ought to help you. मु तुमको निश्चित भाबे हेल्प करबी. मोर इच्छा अछि. I am interested. He ought to donate his eyes. He had to donate his eyes. Is going to donate his eyes. So this is his wish. Yes or no? Rule number 4. Rule number 4 कोन बिले 4 होची to express advice. उपदेश दवा पाई. कोन कोई उपदेश दवा पाई. You might go get up early morning. सकाळ ठीक बेगी उठुनु पढा पढी करि परिबो नहीं. You might get up early. Like this you can go. Rule number 5 कोन to express probability. संभावना व्यक्त करिबा पाई. To express probability कहले कोन बिले he ought to be at home now. He should be at home now. He ought to be at home now. जदि should लगौ छै हमें एटी कम चांसेस होचे. But if we are using ought, हमें जदि ought व्यवहार को there are 99% chances are there. We must be there. Then to express necessity and duty, ought to आउ कोन पे व्यवहार हेतै? To express necessity and duty. Necessity कहले कर्तव्य परायणता माने आवश्यकता एवं ड्यूटी कहले कर्तव्य परायणता. एथि पई भी व्यवहार हेते कोन यू ought to do the lessons. तुम पाठ पढिबा दरकार. You ought to do the lesson. छै भलिया वर्तमान देखिया पे यूजेस ऑफ मस्ट आज सारी बार अछि बहुत सारा अछि एबे भी. ओके मस्ट पर मु सार देबी क्लास टा बिले हैं. ओके सो मस्ट यूजेस ऑफ मस्ट केते बेले व्यवहार हबो एटा थिला माइट. वर्तमान जीवा मस्ट पाखु को. तो मस्ट केते बेले व्यवहार हबो मस्ट. लुक एट दिस मस्ट यूजेस ऑफ मस्ट टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन. फर्स्ट थिंग one is to express obligation कौन जिनस को मानिबा रूल को मानिबा जेमती हैं. सो हियर आई मस्ट गो नाउ देयर. वर्तमान मु निश्चित भाबे सेठी की जीवा कथा. वी मस्ट डू आवर ड्यूटी. आमे समस्त काम करिवा कथा. यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स. तमे निश्चित भाबे तुम बापा मां को माने मानिबा कथा. सो स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर्स. पिला माने तांके टीचर मान को मानिबा कथा. दिस इज व्हाट what probabilities you can say. Obligation. This is what obligation hala. एक नंबर. 2 नंबर कोन to express necessity. To express 2 नंबर होची to express necessity आवश्यकता व्यक्त करिबा पई. necessity व्यक्त करिबा पई हम व्यवहार करबा. You must sleep 6 hours at night. राति रे कम से कम 6 घंटा at least 6 hours सोइबा दरकार. You must work hard to get good marks. निश्चित भाबे भलो मार्क पाइबा पई परिश्रम करिबा आवश्यकता रहिछि. रूल 3 नंबर रूल कोन टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. 3 कहला टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करिबा पई. टू एक्सप्रेस
पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करबा पई जेमिति ही मस्ट बी ए डॉक्टर से निश्चित भाव डॉक्टर हम तार पाठ पढ़ा देखिले जना पड़ुची ये मस्ट बी ए डॉक्टर दे मस्ट बी हंग्री से मुह देखिले जना पड़ुची से निश्चित भाव भोकिला दिए खाई न सका रूल नंबर 4 टू एक्सप्रेस डेटरमिनेशन दृढ़ निष्ठा कर्तव्य निष्ठा जहाँ कह आम टू एक्सप्रेस डेटरमिनेशन 4 टू एक्सप्रेस डेटरमिनेशन व्यक्त करने दृढ़ निष्ठा व्यवहार करने आम व्यवहार करवा सो व्हाट हैपेंस आई मस्ट फिनिश दिस चैप्टर टुडे आज जमती हेले मु ए चैप्टरटा सारिबी आई मस्ट फिनिश दिस चैप्टर टुडे आई मस्ट गेट द फर्स्ट क्लास इन एनुअल एग्जाम आई मस्ट गेट द फर्स्ट क्लास इन एनुअल एग्जाम रे जमती हेले मु फर्स्ट क्लास पाइबी नंबर 5 है टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन मना करबा पई हैं टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन 5 है टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन मना करबा क्षेत्र रे हमें व्यवहार करबा टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन कहले कोन यू मस्टंट स्मोक हियर बाबू एठी दिस इज अ पब्लिक प्लेस यू मस्टंट स्मोक तमे स्मोक करो नहीं यू मस्टंट गो देयर तमे सेठी जीवा कथा नुह बिकॉज दैट इज प्रोहिबिटेड एरिया ओके नेक्स्ट रूल नंबर 6 टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और बिलीफ टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और बिलीफ निश्चितता एवं विश्वास व्यक्त करबा पई मध्य कोन व्यवहार होता है मस्ट व्यवहार होता है लास्ट रूल व्हाट इज इट टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और बिलीफ सर्टेनिटी टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और बिलीफ विश्वास सर्टेनिटी और बिलीफ ये भी व्यवहार होता है पहले जमती ही मस्ट हैव एंगेज समवेयर मोर विश्वास अच्छी से कोठी ना कोठी एंगेज ही जाइए ही मस्ट हैव एंगेज समवेयर मिस्टर मिश्रा मस्ट बी द चेयरपर्सन इन दिस एसोसिएशन से निश्चित भाव चेयरपर्सन हवा कथा रूल नंबर 7 पिले मॉडल आउ जो रहिला डेयर नीड यही सब सब ऊपर मु आलोचना करू नहीं आज सारिबा क्लास को दुईटा क्लास रे मॉडल को सारिबा में सो रूल नंबर 7 कौन कहे टू एक्सप्रेस और ड्रॉ ए कंक्लूजन टू एक्सप्रेस और ड्रॉ ए कंक्लूजन गोटे कंक्लूजन ड्रॉ करने कंक्लूजन कहले कौन कहले इति कथा बा शेष कथा सो कंक्लूजन ड्रॉ कर यू मस्ट बी जोकिंग जोक दिस इज जोकिंग यू मस्ट बी जोकिंग मिछ कहूँ तुम so the newspapers they are joking to the students that the exam is going to be held in March paper मानकर जो मार्च रे एग्जाम होबो बोली बाहरुची there is no proper ground that they can tell like this so what is it to express or draw a conclusion so this is the class that's all for the day see you in the next class tomorrow grammar रो आउ गोटे फंडा आनी की आसंते कले आउ गोटे क्लास करबा आउ गोटे नुवा टॉपिक रे क्लास करबा आर्टिकल ऊपर करबा नले टेंस ऊपर करबा नले भर पैटर्न ऊपर करबा जहा भी करबा आसंते कले आमे कथा हेबा सी यू देयर आउ एग्जाम बाबद रे मु अपडेट देबी तुमको चिंता करो नहीं आई विल गिव यू अपडेट ओके बाय बाय।